Okay, so welcome everyone to the doubt clearing session of this week. So here we will start by discussing about the Faraday's law and how it generates an electric field and how it is related to the change in the magnetic field. Then we will talk about Lenz's law and then we will solve some problems based on Faraday's law and then we will calculate some boundary conditions and all. Okay, so first thing first, what is magnetic susceptibility? So it's a say how it responds to the applied field. So here H is the applied field and M is the magnetization of any material. अब इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन है वो ससेप्टिबिलिटी है और क्या यह बताती है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मतलब अगर हम किसी एक मटेरियल को एक एच इंटेंसिटी की एक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो उत्पन्न मैग्नेटाइजेशन होगा एम वो जो जिस फील्ड में हमने रखा है मैग्नेटिक एच फील्ड में जिसमें हमने मटेरियल रखा है वो कैसे रिलेटेड होगा एम से। चाई एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है यहाँ पे ये ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। अब अगर एक लीनियर मीडियम है तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एच और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है एम इनमें ये रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम। लेकिन अभी हमने देखा कि हम अगर यह मानते हैं कि जो अगर किसी मटेरियल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है एम है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं काई एम एच बार एच वेक्टर। तो हम क्या करेंगे हम एच को एज इट इज ले लेंगे और एम को काई एम एच लिख देंगे और उससे हम देखते हैं कि एच वेक्टर को कॉमन लेने पर हमारे पास एक टर्म बचता है म्यू जीरो वन प्लस चाई एम एच। तो ये पूरे एक टर्म को जो इसको हम एक नई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं म्यू आर। म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है सॉरी ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है एक मीडियम की। ओके, तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि which of the following parameter is used to assess the magnetic ability of a material। तो अभी हमने पहले ही देखा कि हमें किसी भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल की कुछ भी प्रॉपर्टी पता करनी है तो हमें उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है और हमें वहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी जो उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होगा और जो जिस फील्ड में हमने रखा है उनके बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन काई एम से डिनोट किया गया है। तो अगर हम किसी भी मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसकी जो काई एम जो ससेप्टिबिलिटी है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो तो वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो हर एक मटेरियल के अलग अलग मटेरियल के लिए जो काई एम की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। तो पहले क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी ही सही आंसर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी एक मैग्नेट और एरिया से रिलेटेड है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के एक 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 मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मतलब ये एक क्वांटिटी है जो हम हर एक किसी मटेरियल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वह उसके मटेरियल कैसा है या किस तरह का है उसके बारे में नहीं बताएगी क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ बाहरी मैग्नेटिक फील्ड और उस मटेरियल के एरिया पर निर्भर करता है। जो मैग्नेटाइजेशन है तो मैग्नेटाइजेशन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पर बदल सकता है तो वह भी सही नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो खुद में ही एक मैग्नेटाइजेशन बनाता है तो वो भी डिस्टेंस के साथ उसके एम्पलीट्यूड में चेंज हो सकता है तो इसको भी हम हटा सकते हैं।
लेकिन ये जो ससेप्टिबिलिटी है कांस्टेंट ऐसा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा आप कर दो उसके साथ चेंज नहीं होता, ये अगर वह मटेरियल लीनियर है, लीनियर मीडिया है तो इस तरह से ससेप्टिबिलिटी सही आंसर है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मटेरियल तीन तरह के होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट, एक होता है डायामैग्नेट। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि अगर मान लो आपने एक्स डायरेक्शन में एक एच इंटेंसिटी की फील्ड लगाई, तो उनका जो इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है वो उनके अपोजिट होता है। मतलब अगर आपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड लगाई है तो जो मटेरियल है उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में तो इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर रिलेशन से हम देखेंगे कि m इज इक्वल टू चाई एम एच। अब हमें h का पता है कि x डायरेक्शन में, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होगा माइनस एक्स में होगा। तो रिलेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एच एक्स कैप। इसका मतलब जो ससेप्टिबिलिटी की जो मैग्नीट्यूड जो ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन जीरो है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, जहाँ पर हमें देखना है कि फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें पता है कि जो ये म्यू आर है ये रिलेटिव परमियाबिलिटी है, जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि वो कैसे आती है और क्या है। तो अभी हमें कहा गया है कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये मटेरियल्स होते हैं जिनका अपना खुद का कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, जो मतलब परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते ये। इनको अगर आप फील्ड में रखोगे तो ये इनके जो डोमेन्स हैं, अभी मैं एक सेकंड इसको मैं आपको शेयर करके बताना चाहूंगा। ओके, तो, तो मैं आपको इसके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी। तो मुझे लगता है कि मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। तो अगर अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें जो एक नॉर्मल मीन्स अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर बी इज इक्वल टू जीरो है, तो उसमें जो छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं मैग्नेट्स में इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन इसी वजह से इनका जो टोटल मैग्नेटाइजेशन होता है एम आई समेशन ऑफ आई फॉर ईच डोमेन ये जीरो होता है। लेकिन अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर ये जो सारे छोटे छोटे डोमेन्स हैं सब सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मतलब ये डोमेन में भी जो भी स्पिन्स होंगे सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं यहाँ पर भी। तो इस तरह के मटेरियल को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन अब इसमें इंड्यूस हुआ है एम
एम जो है वो बी की डायरेक्शन में है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो है, इसमें एक मैग्नेटाइजेशन जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब जो म्यू आर है, और म्यू आर क्या था, म्यू आर था 1 + एम म्यू जीरो। म्यू जीरो कांस्टेंट है, मतलब अगर मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है तो मतलब ये जो म्यू आर है, म्यू आर इसका मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। तभी इसके डायरेक्शन में जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ये इससे ग्रेटर देन 1 है। नहीं तो किसी भी मैग्नेटिक, मतलब हमारी हर एक मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो एम है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 ही होगा। यहाँ पर इसका मतलब म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, तो रिलेटिव जो परमेबिलिटी है वो उससे बड़ी है। तो यह पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ट्रू है। उसके बाद हमारा हम देखेंगे कि फैराडेज लॉ क्या होता है। तो फैराडेज लॉ इट्स वेरी सिंपल। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी। तो यहाँ पर जैसे हम पहला केस देखें, पहले केस में क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। आप बड़े स्क्वायर बॉक्स में देख सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से उसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। तो आपने एक ऐसे प्लेन है और उसमें इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड है। अभी आप क्या कर रहे हो, एक लूप ले रहे हो छोटा सा, और उसको इसमें ऐसे मूव करा रहे हो। तो उस लूप में हमें ये दिख रहा है कि उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, एक उसमें करंट फ्लो हो रही। दूसरे केस में क्या किया कि लूप तो उसी जगह पे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड को इधर मूव करा दिया। तो तभी तभी हमने देखा कि वहां पर एक फिर से करंट इंड्यूस हो गई। और इसके अलावा और एक और काम किया गया कि आपने लूप को भी वैसे रखा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था उस मीडियम को भी वैसा रखा। लेकिन अभी आपने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसके एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर दिया। तो उससे भी उन्होंने देखा कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। तो उन्होंने इसको बहुत ही आसानी से लिख दिया कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है फेराडे ने, उसको उसको मैग्नेटिक फील्ड के बी के प्रोपोर्शनल है। इसको अगर हम अच्छे से समझें कि यहाँ पर अगर मान लो कि इस इस जो लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये करंट का जो लूप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माउस, ये जो अंदर है इसका एक अपना एरिया होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसका अपना एक स्ट्रेंथ है बी। तो अगर इस एरिया और इसका मल्टीप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमें हमें एक क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं फाई। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है कि ई डॉट डी ए जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर बी डॉट डी ए जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को हम जैसे ही मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बी डॉट डी ए है, मतलब जो एरिया बी इंटू ए है, ये एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि आप लूप को बाहर ले जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से। तो बी इंटू ए जो है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ फ्लक्स चेंज आया, और फ्लक्स चेंज समय के साथ अगर हम देखें तो डी फाई ओवर डी टी होगा। तो वो जो फ्लक्स चेंज है वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक वोल्टेज जनरेट करता है, जैसे कि ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा और उससे एक करंट फ्लो होगी। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या क्यों है, ये इसकी इसके लिए हम लेंस लॉ देखेंगे, जहां पर हमें ये पता चलेगा कि जो लेंस लॉ बेसिकली यही कहता है कि जो
फ्लक्स चेंज है उसको नेचर हमेशा अपोज करती है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यही लेंस लॉ है। लेकिन उसी हिसाब से क्योंकि फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा था, इसमें जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस तरह से इंड्यूस होगी कि जो इससे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड हो, जो इस करंट से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड हो, मान लो आपने जेड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने बी डॉट डी ए किया, तो इसमें एक फ्लक्स चेंज हुआ। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो आपकी इसमें करंट इंड्यूस हुआ है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज से अगर आप अपने जैसे एम्पियर के लॉ में हमने किया था कि हम जिस डायरेक्शन में करंट कर्ल हो रही थी अपने राइट हैंड साइड के व्हीलों को उसी तरह डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो हमें अंगूठा जो होता है वो डायरेक्शन बताता है जनरेटेड इंटू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम देखेंगे कि ये उसके अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की मतलब जो ये करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये बन रही है उसी को अपोज कर रही है, तो यही लेंस लॉ होता है। इसमें हमने इसी वजह से यहाँ पर वो नेगेटिव साइन में आता है। तो अब क्या होता है कि लेकिन हमें ये पता है कि जो ईएमएफ है वो ई डॉट डी एल के बराबर होता है। ई डॉट डी एल क्या है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो ई डॉट डी एल के बराबर है। मतलब एक वोल्टेज जो वोल्टेज में मिला है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज इंटीग्रल की वजह से मिला। ये हम हमेशा लिख सकते हैं किसी भी वोल्टेज के लिए। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी डॉट डी ए। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो ई डॉट डी एल अगर क्लोज इंटीग्रल में है इस सरफेस पे, इस मतलब ई डॉट डी एल का कहने का सिंपली यही मतलब है कि आप इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और उसका डीएल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये यही मतलब है इसका। तो अगर ये ऐसा है तो हमें पता है कि हम इसको सरफेस इंटीग्रल भी लिख सकते हैं, जहां पर इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। ये हमें पता है। तो ये स्टोक्स थ्योरम होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि डेल क्रॉस ई, तो इस राइट लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, और राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले से ही है माइनस डेल बी डेल टी डॉट डी ए। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम एक किसी आर्बिट्री एरिया के लिए हम इसको मान सकते हैं कि एरिया नॉन जीरो है। तो जो ये ओके, इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे कैसे हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म से इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर है हमारे पास एक डॉट। तो हमने देखा कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ था, हमने देखा कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था एप्सिलॉन, वो था माइनस डी फाई, जहाँ पर हमने फ्लक्स को किसी गिवन टाइम टी पर ये डिफाइन कर रखा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, एरिया 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 वेक्टर। तो हमें ये पता चला कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में ये एक यूनिफॉर्म एक एरिया था जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म थी, और उसमें हमने एक उसमें हमने एक लूप हमने एक लूप ऐसा बना रखा था और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें ऐसे करंट जनरेट हो। तो हमने ये देखा कि इस लूप को अगर हम बाहर मूव कर रहे थे तो हमें ऐसा कुछ टाइम के साथ एक ईएमएफ देखने को मिल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है ई डॉट डी एल
आप अगर याद करो तो जो पोटेंशियल होता था, जो पोटेंशियल है वो होता है V इक्वल ई डॉट dl। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ई डॉट dl है। इसको हम लिख सकते हैं फिर, ये पूरे इसके सर्किट की वजह से है तो क्लोज इंटीग्रल में था। फिर इसको हम राइट हैंड साइड को भी हम लिख सकते हैं कि ये v डॉट ये का डेरिवेटिव है, और इसको हम उधर लिख सकते हैं कि ये डॉट डीएल की वजह से आया है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है इस पूरे सर्किट में उसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट हुआ है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर डी बाई डी टी बाहर ले लेते हैं और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं डॉट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सरफेस। सरफेस क्या है? सरफेस ये जो एरिया, यहाँ पर ई डॉट डी एल, लेकिन हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम से अगर हम किसी भी अगर बाउंड्री पर, मतलब एक जो जो भी बाउंड्री है वो अगर कोई एरिया इनक्लोज करती है तो उस पर कोई वेक्टर अगर इस तरह से डिफाइंड है जैसे कि ए डॉट डी एल, ये जो उस एरिया की वजह से जो क्लोज इंटीग्रल इसका जो होगा उस एरिया की वजह से इस तरह से लिखा जा सकता है हमेशा, डेल क्रॉस ए डॉट डी। तो ये दोनों बराबर हो, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट डी ऑन दैट सरफेस। उसका कर्ल लेंगे वेक्टर का और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे इस एरिया पर, तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम फिर इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा डेल क्रॉस ए, सॉरी, डेल क्रॉस ई डॉट डी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन डी बाई डी टी इंटीग्रल वी डॉट डी। अब हम इसको एक तरफ ले आएंगे तो हम देखते हैं कि इस क्योंकि जैसे सरफेस इवोल्यूटेड है डी बाई डी टी, और फिर हम देख लेंगे यहाँ पर डॉट, लेकिन अब हम ये इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब हो सकता है? चूंकि ये जो एरिया है ये आर्बिट्री है, कहीं भी एक नॉन जीरो एरिया मान सकते हैं इसको हमेशा, और ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये जो इसका आर्गुमेंट है ये जीरो होना चाहिए इंटीग्रल, ये जीरो है, जीरो के इक्वल है, इसका मतलब डेल क्रॉस ए प्लस डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल। इस तरह से हमने देखा कि ये भी फैराडे लॉ है, बट ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पर आधारित। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि ये हमारा क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल increases, decreases, first decreases, then increases, first increases, then decreases। तो आप देख रहे हो कि ये मैंने एक इमेज है हमारे पास जहाँ पर ससेप्टिबिलिटीज प्लॉट की गई है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पैरामैग्नेट के लिए टी इक्वल टू जीरो पे जो ससेप्टिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि उसमें हमने पहले ही देखा था कि जो पैरामैग्नेट है वो डोमेन्स की वजह से होता है। तो कम टेम्परेचर पर सारे डोमेन्स एक जैसा अलाइन होने में बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सब डोमेन्स अलाइन होने में प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है।
फेरोमैग्नेट में क्या होता है कि क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर सारे डोमेन्स अलाइंड रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के नीचे होता है वो एक पैरामैग्नेट बन जाता है, मतलब उसका अपना खुद का एक मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, उसमें भी डोमेन्स फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक पैरामैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर आप इधर एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक पैरामैग्नेट के कर्व को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो एंटी फेरोमैग्नेट है उसमें जो ये होता है कि एंटी फेरोमैग्नेट में सबसे पहले उसकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है एक गिवन टेम्परेचर तक, उसके बाद उसकी सस्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसमें क्या है कि विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर magnetic susceptibility of antiferromagnetic materials increases decreases, first decreases then increases, first increases then decreases। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक नील पॉइंट लिखा है, उस नील पॉइंट से आने से पहले जो ससेप्टिबिलिटी है वो इमीडिएटली बढ़ रही है, और उसके बाद जैसे ही वो नील पॉइंट हम क्रॉस करते हैं हम देखते हैं ससेबिलिटी फिर से डिक्रीज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो ससेबिलिटी होगी पहले इंक्रीज करेगी उसके बाद डिक्रीज करेगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ रीजन बी, जहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, ई टू पावर माइनस टू टी का मल्टीप्लीकेशन है इस एम्पलीट्यूड में। A square loop of 2 meter side is placed in XY plane. The EMF induced at loop in the loop at t is equal to 1 second each। तो हमसे EMF induced EMF पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कि EMF induced को हम लिख सकते हैं फ्लक्स चेंज के बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक सेकंड में फ्लक्स चेंज कितना होता है, उसके बाद हम अपने लूप में कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई जी माइनस फोर के पावर माइनस टू टी वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक थिंग। A square loop of 2 meter side is placed in XY plane। स्क्वायर लूप है, इसमें हमारी जो साइड्स हैं 2 मीटर इधर और इधर, और डायरेक्शन ऐसी है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स क्रॉस वाई जेड, इस तरह से ये यहाँ पर डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स कैप इधर है, वाई कैप इधर और जेड कैप ऊपर। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें टी इज इक्वल टू 1 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज होगा। सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया हमारे पास इस पूरे का होगा कॉस्ट मीटर स्क्वायर मीन्स 4 मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये 4 मीटर स्क्वायर हो गया। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए हमें रखना है 16 into e to the power bracket exponential of -2 exponential of -2
हमारे पास EMF आया 18.69 यहाँ पर हमारा EMF जो है 18.16 वोल्ट है। इसमें से आंसर रॉन्ग है और जो हमारा एक्चुअल कैलकुलेटेड EMF है 18.6 राइट। Okay, so I think we have to do this again. So what we were asked after calculate the magnetic flux, we have this reduced by G minus 4 power minus 2 square. But we have this area. So this area, if you consider this element A, so it will have a perpendicular n cap that will denote its direction right and that's rod. So if you consider the coordinate system like this, x, y, z, we can see that the area element A vector is 4
z cap. Sorry, equal to 64 z cap. That means the area limit, but the magnetic field is also given like 2I 3j minus 4k or minus 2t. So the flux by B dot A, and that means it will be like 2I plus 3j minus 4k or minus 2t into 4 z cap, like minus 16. Okay, so k cap is the z direction, so I check k minus 16 or minus 2t. But dp over dt minus 16 minus 2 or minus 2t, like 32 or minus 2t. And the flux change, the mode of the 2 d5 dt, 5, so d5 over dt, take the mod value 32 or minus 2t. But amplitude at t is equal to 1 will be 32 or minus 2 into 1, and it will be like 32 or minus 2 into 1. And if you calculate it using this calculator, you can see that the voltage that comes out to 4.33. Okay, now let's go to our next question. Our next question is question 5, where a circular conducting ring of radius r rotates around its okay, save this again. Save now. Okay. Question number 5, circular conducting ring of radius r with constant angular velocity omega about this diameter is placed along the x-axis, and the uniform magnetic field is applied along y-axis. So it's saying that if you have a circular ring of radius r, so if you have a ring, it has a radius r, x, and it rotates, and then is applied y direction. How we can visualize this? It's just saying a circular conducting ring of radius r, circular conducting ring of radius r rotates with the constant angular velocity omega about its diameter placed along y-axis. So its diameter is this, and it rotates like this, and it has some y direction. It has it has some magnetic field that is uniform, means V on y cap, and at 90 the ring is entirely in xy plane. The EMF induced in the ring at greater than 0. So we know that flux change would be
rotate when we are checking the what area. So we know that the area of that ring will be uh, pi r square. But since okay, and how it is changing is how the flux is changing. So okay, so the how, but the area is changing. So means that we have the area, we have the magnetic field, but the area is time dependent. Means how much area is there with the so means for so here I have according to the question I have a circular conducting loop of radius r that is x like this x y how it rotates this one this manner like this. So at some time this make an angle theta is normal to the surface. We make an angle theta. Okay, so the disk is like this and it will rotate like this. With wise it makes an angle theta at some time and it will come to in. So it's making angle theta with y because in y we have this magnetization that is we want y in magnetic field like this. Now at any given time the flux will be and we know that v naught is constant in y direction. So the component of this unit cap n in the projection of y if it is making an angle theta will be r n cos theta. N cap is just a unit vector, so it will be like v cos theta and into the area of this disk will be pi r square. Okay, so that means when this normal is making an angle theta, so this is the in this the normal is making an angle theta. When theta will be zero, uh, all the things like b cos zero should be zero because it's aligned. So the area is aligned and the magnetic field is like this. They are in the same direction. So b cos theta, right? Now what we have next is, but we know that theta is nothing but it's r
theta is you look about this d theta and the r d theta. We know that this is nothing but a change in this one, this theta. So, like okay, so it will be like something. Because we know that r d theta should be the distance that is being traveled in the uh, theta cap direction is this direction. So that diminishes, but we know that this distance is nothing but r into angular velocity, means angular velocity into the time dt. This means d theta over dt is nothing but omega over r. Right? Now we calculate the flux d phi over dt. We should have v1 pi r square cos theta and d theta over minus sin theta d theta over dt. Okay, but d theta over dt is nothing but omega. So we have v naught omega pi r square sine of sin theta. Sin theta is nothing but sin theta is nothing but the omega into t. So we know that how the angle is changing. So we know that d theta is nothing but d theta over dt is omega. It's angular velocity. So that d theta will be omega into dt. That means we can replace this theta is equal to omega t, the expression of phi. So phi will be v naught cos omega t pi r square, and then d phi over dt will be pi r square v naught minus sin omega t into omega. So the EMF will be minus d phi over dt, and then you can have the EMF pi r square v naught sin omega t. That means when the theta means the omega t is 0 at t is equal to 0, the EMF will be 0, or the both uh, the field lines and the plane are aligned, and that means that the unit vector direction is just perpendicular of this. So it means that the v naught omega square pi square r square sine omega t is the correct answer for this. So, okay. Next is next question is this one, the bar magnets. Okay, so here on my screen. So and what you have a ring and you have a magnetized M that is on the inside and it's coming like this. Velocity V and a distance t, and then we are saying that this t is greater than r. So uh, now we have to calculate the EMF that has been induced in the ring. So we know that uh, we have to first calculate due to this magnetization M, what is the magnetic field acting on the
this ring of radius r. So first, by observation, we can see this is the how the field lines are going. Uh, Now this is how it is going. You can see that this field lines can be written like this and this and this and this. So only the cos theta component will survive. So that means if this angle is theta, cos theta is r, the distance now to this magnetic M, the magnetization is given as 2p over r cube. So the magnetization due to magnetic moment M, we know that it's sorry, it's 2m over r cube. So we can have we can write the magnetic field equal to mg over 4 pi r cube. Okay, m upon r cube. R cube is equal to d square plus r square over 3 by 2. And m we know that for it's given. So we have d is equal to 4 pi m over r cube into the cos theta. Cos theta is nothing but c t over under root d square plus r square. Okay, so r cube and r square. Now what we are saying that this is the beam and the area that is there is nothing but the pi r square. So we would have sorry not here. Let's write something else. So let's first we need to write 4 pi m over r square sorry 8 square plus capital R square and this will be about 3 by 2 and then d square plus R square. Now what we can do, we can do this that the the approximation this approximation we would have sorry we would have like for this have this now we can write because this will be so our area of this will be pi r square this so 5 a pi square plus r square and it has 3 by 2 plus 2 square. So that means pi capital over pi r square, but in the approximation it is greater r cannot in the denominator r in the denominator and okay so this
cancel out. And r r square. So this is r square. R square. Yeah. And since the theta is changing, that would be also reflected in this velocity. The velocity. Okay, that means this is only the entity is equal to some different point. But the t is also a function of time. T is, but t can be t is velocity can be t equal to time. So this is the velocity. So the cos theta term, I think should write t as the because uh, because t is the distance to this, so we should have the distance t square is r square into this over m. Write this this t is nothing but the v into t. This is you can take it like this. What will happen once you take the derivative of the value of the phi? Like phi into phi dt with the EMF. So you will have something this phi m over oh, c r square. So I think first you have calculated the magnetic field, then because the theta will change cos theta depending on the distance. So that distance is nothing but the p into t divided with time and multiplied with area. You count the flux and flux change, and then that's the EMF that you have. So according to this, it will be like mu zero. But pi has been cancelled. So pi mu zero over of 4 is 4 4 r square and m field. So this is the answer of the EMF generator. Okay. Now we go to the next question. Question number 7 is an infinitely long wire is carrying this current IT. IT is nothing but I naught cos omega t. And you know that due to this infinitely long, what you say, this wire has this magnetic field of mu 0 over 0 over 2 pi s. So whatever the magnetic field is in the phi cap direction, 0 pi over 2 pi s, phi cap direction. So let's share my screen really quick. So here is this. But so this is the wire, and according to the question, this is the wire, and this is at a distance a, and the
A square also has the dimension of A. So what can be said about the EMF generated from this wire? And the EMF is generated, if we know that, it's divided by the resistance, the current. Okay, so let's do this. So this is the magnetic field. This is the current I that is being carried IT. So okay, this is IT, and this is how the field will be there. Now what we have to do, we have to just uh, calculate the total flux that is being changed by A, and for this area it's A square, and then let's say this uh, okay, so at every point in this magnetic field will be like current is going in this direction, so it will like coming out, so it will be like a point, it will like it's just coming out in the phi cap direction, and the area is also in the phi cap direction, it's coming out towards z. So in the plane the phi cap being z, so it will be like A square I but I S. But okay, so this is 25, but this is changing from let's say some distance S to S plus A. So we have to also take care of that. Just by S, and now we know that this length is A. So, but this the length in this direction is dx. So that has to be integrated from S to S plus A. And we know that S in this distance is A, so it has to be integrated from A plus A means that A is equal to 2. R by the distance S now A plus X change of variable y is equal to y, the limit, and x is equal to a, y is equal to twice of a, and x is equal to 3. Sorry, yes, that x is equal to okay, sorry, x is 0, right? And here x is 0 and this variable. So first y will be a, and when x is equal to a, by twice of a. Okay, so let's write r by dy, but the limit has been changed from 0 to 2, and the x was going from a to b. This one, and the upper limit was always from a, it was starting from a, and after doing this substitution, no, because we were taking the dx this element, so it was always going from 0 to a, right? But after taking the dy, it is now going from 0 to, so it was not mistake 0 to a, ds variable of that.
LNY, thus I, and know that I is timetable for IT, I, 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 the current uh, calculated previously, and that means if you write this, sorry, it has been that means that means you can just what was the current was by not cos omega t, so just divided a to pi, but the cos omega t now I am not sin omega t is a minus sign into omega plus the current that is induced is but I not omega to obviously the magnetic field is zero pi is zero pi this so the correct answer for this is mu zero this is the resistance R. So it can be written like this 2 pi like I naught a number R into ln current then we'll get and you can see that this is option A is correct. Now let's go to question. Question is consider an infinity solenoid of n turns per length, radius r carrying a current it is equal to alpha cos omega t. So alpha is constant and omega is the angular frequency. So we have to calculate the magnitude of the electric field at the surface. Okay, so we know uh, basically so we know that due to this law, we can write down not I enclosed. So we know that each of the solenoid is carrying I, the current in the solenoid is I. So we will L
there are n numbers of n numbers. So n is the number of loops per unit length. That means the total number of I current carriers will be n into L, and the current is I. So we will write B is equal to V is to N I over L into L, and cancel out A B is to N, and that's this is X, X, and outside of this, here 0 because this is nothing. So this is the field that we have, and it's time dependent because of and alpha also because now current is time dependent. Now we have to calculate the magnetic field or electric field this uh, due to this at the surface of the solenoid. So that means for calculating the okay, so we can so for this we know that is GT of authority is equal to minus G for dt. So let's say this solenoid the surface that is the current that is carrying the surface. So what will happen around this? Take a political E dot symmetric. So E dot B by S. And much n is same everywhere. So E dot D will just come out, and then we have this minus d5 over dt, and d5 over dt we know and alpha significant t. The x cap direction x cap. Now the field that is there will be like so d5 by dt. We have to take a derivative of it. So it will be like plus sine omega t. Sorry for the mistake. Electric field n alpha sine omega t by s. So this is how it can and for multiply with the area or just n alpha sine s cancel out. So it will be like only to the bottom. This is how it is. And this n alpha sine, and there will be one s term. So s by 2 should n alpha sine t phi cap direction. The electric field, because of symmetries, taken the electric field in this direction, and uh, so the induced so the magnetic field that generates this electric field if it is not like this, so the x cap and the phi cap are same because they are in the same direction. So the x cap they are same, and this is how you can get your electric field. Okay. Now the next question is question number. Okay, before going to next question, we can recall some things very. Because in the previous week we have calculated the bound currents, surface currents, and all. We said that in the magnetic material, if you place it in a magnetic field,
So there would be free currents and the bound currents that will be flowing on the magnetic material, and that will give rise to the Ampere's law in presence of of these bound currents, and the Ampere's law will get modified. So 1 over mu 0 del cross B is equal to J, and that is nothing but JB plus JF, and JF is the free current. But we know that the bound current at the surface can be written as del cross M. So you can just do some algebra that you can plot the del cross M terms here, and you can, sorry, this one's mistake. Del cross is common for both and M, and then it can be written as a new quantity that is nothing but 1 over mu 0 minus M. And so M H is an auxiliary field that is defined like this, where del cross H is uh, like this. So this is the Ampere's law in the new form, and then you can do this del dot H is equal to minus del dot M. Initially we got del dot 0. This is what we have to recall, and also the boundary conditions. So here you have seen that the B perpendicular is always continuous, but the B parallel that is along the surface is had some discontinuity due to the surface current that is flowing on there. Okay, and in the presence of this H, you can also see that in the presence of this magnetic material, the H perpendicular is discontinuous and the H parallel is also discontinuous. But same cannot be said about the B parallel, B perpendicular, because B perpendicular comes from B dot dA, and that so says that there are no so with this understanding of this boundary condition that we have studied last week, we can answer the following question. At a surface current, which of the magnetic boundary condition is not correct? Normal component of the magnetic field is continuous. Yes, we can see that the normal or the perpendicular component to the surface is continuous. Okay. Normal component of magnetic vector potential is continuous. So vector potential across the boundaries are continuous, whether it can be the electric potential or the magnetic potential. In case of this magnetic field, it's continuous. The tangential, so vector potential is continuous. That means the tangential and the uh, tangential and the normal both component will be com- continuous. So, and that's an again, then there is T, the tangential component of the magnetic vector potential is not continuous. So this three option is that one that is correct, because vector potentials are continuous across the boundary, but their derivative across the boundary may not be continuous. And yes, generally it's the case because the derivative are those things that give rise to the electric field of magnet. And then we come to this energy stored in the magnetic field. So here we can see that M is equal to chi m h, as we have discussed previously. So HIM is the magnetic susceptibility, and then you can write this, and then B is equal to mu 0 H plus M that we have seen here. This is how you arrive to this conclusion that H plus M into mu 0 is equal to P. So this is how you have written it. And then just there is mu r, because we are replacing this mu 0 1 plus I as a whole. So mu r is the relative permittivity and the energy stored in a magnetic field in a vacuum. Vacuum matlab means so there is nothing, there is no magnetic materials present. So mu r will be mu 0. Mu 0 is the permeability of air, so 1 by 2 dot pH. And you can see that if there is no permeability, so it's mu r will be mu 0, so H will be P, and it will be P square over mu 0. So this is how you can write the energy. And if the energy is, this is the energy, you can write it. Okay. So now in the question number 10, we have to calculate. Oh, sorry, sorry. Okay, let me say that things again. So, okay, so this was the boundary condition, and this was what we had to recall. So we have the magnetization M, and
we have modified the Ampere's law by taking the current density J as a JB plus J field. So where JB is the bound current, and that is due to the magnetization M. Now, if that is the case, then 1 over mu 0 del cross B should be the total current J. This is the Ampere's law. Now, but J can be written as the separate function of G, summation of bound current and free current. So free currents we can write at it, but their bound currents can be written in terms of the magnetization that is present in the sample. So 1 over mu 0 del cross B minus M is equal to J of free current. So this is total is H is equal to 1 over mu 0 B minus M is equal to free current. So del cross H equal to J of J free current. And that means this is the new modified Ampere's law. Because here you see 1 over mu B, 1 over mu 0 del cross B is equal to J. So the total current. Now you can define an auxiliary field that is H or intensity, field intensity H del cross H like this, where this will only consider how many three currents are there. So it does not so this is the modified Ampere's law in presence of magnetic materials where they have an M magnetization. Okay, so this is the boundary conditions. This was the question at at a surface current, which of the magnetostic boundary conditions is not correct. So the normal component of this is like this, and then because it's continuous, you can see that here. But vector potential is always continuous, so it does not matter which component you are looking at. Tangential component of vector potential is not continuous, it's not correct. And then again, we can define the energy defined by 1 by 2 B dot H, but B is dot H defined by B is equal to R H. You can see that from here. Then you are in the relative permittivity. So permeability. So it's nothing but P dot H. So it will be 1 over B square mu G. And this is how we can calculate it. Now we can go to the next question with this understanding that this is how we can calculate the energy. So a long coaxial cable carries the current as shown in figure. Find the magnetic energy stored in a section of yeah, L. So what we have to do, we have to just calculate the magnetic field, and we have to just take out the 1 over 2 B square mu 0 thing. So how we are going to do that for this question? So let me share my screen. So we can here I will share my screen. Question number 10 is this, that we have a long coaxial cable that carries a current I. This, and there is another.
current in this direction, the another current inside this is opposite direction, and the other current is this is how it is now. So this is A and the other is B, and the currents are in opposite direction. So we have to calculate the magnetostatic energy and between the pins in this electric system in the length L. So we know that due to this PS law, uh, that we this that direction like this. So put your hand in this and then like this. It will be rotating around 5, and that is the current due to this direction. And the outside one that is going this direction will be like this. So it will sum up inside. It will sum up the inside the material, but when you combine both, so if one going with this, so it will be zero total current in this Gaussian surface. So that will be zero. But inside, when you look, so you will have this current going in this direction. So magnetic field will be like this, and current going in this direction. So the magnetic field will be uh, like this. So they will both add up inside the material, but outside it will be zero because of the Ampere's law. Because you can consider something like this. So we closed surface with dot dl around this. What? Because the I enclosed is nothing but zero because the current directions are zero. So we zero and let's say we was 2 pi s. Sorry, zero equal to 2 pi s. Zero. But inside what will happen according to this law? From this is the distance s from the center, so the current that is being caused by this cylinder, this is something like this surface is something like this. So it's s is the distance like this. S whatever this enclosed this goes inside this one is what usually forms just right and here is I guess and what is the current I enclosed I kept that okay now what we can write so this is a magnetic field now the energy energies we have defined energy we have defined it's like this each zero each half square but let's say it has some magnetic material will have some demand so we usually like this energy right the energy density this is per unit volume so if you want to calculate the total energy you have to just multiply it with the volume so total energy in per this volume I square to 8 no no to the pi s square L so if this is what if you consider per unit volume so this is the total energy this is what the energy density
volume. So this is the total energy that you can write. Now, okay, this is energy. We can before we have calculated the volume, but after multiplying the volume, we can get the energy. Okay, so our next is okay. So uh, this uh, this is the last question we have to do. That we have calculated the energy. Right? So today we discussed about this magnetic field, how it can induce the electric field, and have seen different kind of questions where we have solved for the induced magnetic field, electric induced EMF, then current, and also we have solved one question where we calculate the induced electric field, and uh, we have calculated the energy density in this cable. So I think these are the questions that we have done today. And at last, before going to end this session, I want to I want to let you know that I will upload this YouTube video it on YouTube where you can see it on later on. And if I will also share the link of this PPT where you can download and you can see it later on.